Jai Gurudev students, Jai Gurudev and good afternoon. I hope that all of you are safe and secure at home. Jai Gurudev everybody. So today in this live session we are going to start from the Flamingo book, the poem 1, My Mother at 66 by Kamala Das, and I already have sent you a link, and through this link you can connect with me live. And in this live session I will explain you this poem, My Mother at 66 by Kamala Das from Flamingo, the poem number 1. And we will also discuss the questions given in assignment. And I hope that all of you would have watched my YouTube videos I sent you earlier. And on the basis of these YouTube videos, I hope that you would also have solved the questions given in the assignment yesterday. So I am going to start the session. And in this first, I would like to explain you the summary of the poem one by one. And I hope that all of you are listening me clearly. Please send me in the comment if you are listening correctly. Okay, I can see your comments in the comment box. I hope that all of you are listening me well. Okay, so now we are starting from the theme of the poem. So I have sent you in the notes the theme of this poem is based on death and decay. Death and decay, which is a very vital phenomena of human life, and everyone knows that whosoever is born is likely to die one day. So this phenomena of human life has been discussed in this poem through the example of a poet's mother, who is 66 years old. So the theme of the poem is death and decay, which is a vital phenomena of human life. So starting from the poem, I think that all of you would be having the textbook. And in this textbook, you can see the poem is starting from driving from my parents' home. Driving from my parents' home, the poet Kamala Das was returning from her mother's home, from my parents' home to Cochin. She was returning to Cochin last Friday morning, and her mother was also with her. Mother was going with her in the car to see her off at the airport. And Kamala Das has to go to Cochin, and mother was beside her driving in the car, and mother was going up to the airport only to see off her daughter Kamala Das. And at that time the poet looked at the face of her mother. When she looked at the face of her mother who was sitting beside her in the car, she found that her mother's face was looking like the face of a dead body. It was looking like the face of a dead body. So the face, there is a figure of speech simile here in this line, because there is a comparison between the face of poet's mother and face of a dead body. Do you know in the simile there is a comparison between two objects. So here is the comparison between mother's face and the face of a dead body. And why there is a comparison with the face of a dead body? Dead body, the word used for the dead body is corpse. Corpse means dead body. So there are certain words given. These words suggest that the face of poet's mother was looking like the face of a dead body. These words are doze. Doze means drowsy face. It was drowsy, sleepy, open mouth. As you know that the mouth of a dead body remains open. Similarly, the mother was drowsy and in a sleepy state while driving in the car. So her mouth was wide open, and there was no glow and shining on her face. It was glowless. It was ashen. Ashen means without any glow.
ascend like that of a corpse, ascend like just like the face of a dead body. As a dead body, the face of a dead body is open and there is no shining on the face of a dead body. It is drowsy, sleepy. Similarly, the face of poet's mother was looking like the face of a dead body. So the comparison is apt, the comparison is appropriate, and we can say literary device, figure of speech, simile is used in this line. And realize after looking at such face of her mother, such face of her mother, such face, what kind of face? The face looking like the face of a dead body. There was a painful feeling. There was a painful feeling in the mind of the poet. Painful feeling was about the approaching end, approaching death and approaching end of her mother. This is the theme of the poem, death and decay. So this idea of death and decay occurred in poet's mind, and she started realizing that the approaching end of mother was very near. Mother in near future, she will be no more in this world. So this was a painful feeling, and she realized with pain that she was as old as she looked, as usual she looked. So there were certain indications on her face of her old age, and those indications of old age made the poet realize that mother would be no more in this world after some time. And she looked, but soon she wanted to forget that thought. She wanted to forget. She could not bear that painful thought in her mind for long. She wanted to forget that thought, forget that painful feeling. So that thought of poet's mother's approaching death. So thought of mother's approaching death, she wanted to put it away. She wanted to put it away. She wanted to forget. She wanted to expel it from her mind. So she wanted to divert her attention. She wanted to divert her attention from this thought of mother's approaching death. So thought away. So to remove this thought, so forget this thought, she started looking out of the window. Poet started looking out of the window of the car because she wanted to forget that thought, the thought of mother's approaching end, the thought of mother's approaching death, because it was very unbearable, it was very painful for the poet. So that's why she started looking out of the window to divert her attention, and started looking out of the window. And when the poet started looking out of the window of the car while going to the airport, she found that the scene outside the car was just in contrast. The scene outside the car was in just contrast. Just in contrast means inside the car, the poet's mother was old, near death, and approaching very near to her end, and the chapter of her life was about to close. So, and outside the car, the scene was just different. Outside the car, the scene was different because when she started looking out of the window of the car, she found that there were young trees. The trees were young, while inside the car the mother was old. So there is a contrast between the word old and young. The mother inside the car was old, and trees outside the car were young. So there is a contrast between these words, old and young. Mother is old, trees outside the car were young. The mother inside the car was sad and dull, while trees outside the car were young and sprinting. Young and sprinting. Sprinting means appear to run back. So you experience that when you are traveling in the car or you are traveling in a vehicle, you notice that trees and other objects outside the car seems to run back. So this feeling of trees and other objects seemingly running back is called sprinting. Sprinting का मतलब we feel that the things are running back. Things are running back. So there is also contrast in the word sprinting. Sprinting means running back. The contrast in this word running back, because mother is moving ahead on the path of her life. She is moving ahead and she has reached very near. She has reached very near to the destination. The destination of human life is death. Ultimately, the destination of every human being is death. So the mother was very close to her death. She has moved very far at the path of her life. On the other hand, trees appears to run back. The trees appear to run back and mother appear to go
ahead on the path of her life. So there is a contrast between these words. The contrast between old and young, mother is old and trees are young, and trees appear to run back and mother appeared to go ahead on the path of her life. So that's why there is a contrast. Contrast is also a literary device. So there are two contrasts used in this poem. The second contrast is this is also a scene outside the car apart from the trees. Apart from the trees, when the poet looked, she also noticed that some children were coming out of their homes. You see that at the countryside or at the village side, children are running out of their homes to play in the open fields. So they are rushing, they are coming out of their homes energetically. They are coming out of their homes energetically, and they are also very happy. They are also very merry. So children are referred as merry, or while mother inside the car is sad. So there is a contrast between these two words, sad mother and merry children. Mother is old, children are young. Mother is sad, children are happy. So there is a contrast. Seemingly there is a contrast. So this contrast can very easily be noticed by you, because children are young, mother is old. Mother is sad because of her approaching end, while children are merry because they want to play, and they are energetically spilling out. Spilling means something energetically coming out, something suddenly and energetically coming out with zeal and zest. कोई जोश के साथ, एनर्जी के साथ कोई चीज बाहर आती है एकदम से, that is called spilling out. So children are spilling out of their homes energetically with zeal and zest, with energy, while mother inside the car is lying dull, inactive, dead like a dead body on the seat of the car. So there is also a contrast between the word spilling and drowsy mother, sleepy mother, inactive mother, old mother lying inside the car. So very easily, very easily you can find this contrast. So there are two instances, two example of contrast, Again, I would like to repeat, two example of contrast is young trees sprinting and merry children spilling. Trees are young, mother is old. Mother is moving ahead on the path of her life, and trees are appearing to run back. And children are merry and mother is sad. And children are spilling out and coming out with energy, zeal and zest, while mother inside the car is lying like a dead body. So this is the contrast. You can very easily explain this contrast. So there are two examples of contrast. If you are asked, you can very easily explain these contrasts out of their homes. Okay, now next is, but after the airport security check. Now the poet reached at the security check of the airport, standing a few yards away. Standing a few yards away, थोड़ी दूर पर खड़े होने के बाद, at a security check of the airport, the poet now has to part with her mother. She has to go in the flight, and when she was standing and she was bidding farewell to her mother, mother only has come to see her off at the airport. After that, mother would return back to her home, and the poet will catch her flight and she will go to Cochin. So at the time of security check, they were standing at a distance. So while standing at a distance and taking farewell, bidding farewell to her mother, the poet again looked at the face of her mother. And when again she looked at her mother's face, she again noticed that the mother's face was looking like the face of a late winter moon. So again there is a simile in this poem. Earlier we have used the simile when the poet looked at mother's face while traveling in the car, while driving to the airport. She compared her mother's face with the face of a dead body. It has been explained. And now at the security check, when the poet again looked at mother's face, she found that mother's face was looking like the face of a late winter moon. So again there is a comparison between two traits of two objects. These two traits are mother's face and the face of late winter moon. So there is not the whole comparison. There you should always keep in mind that whenever the literary device simile, whenever the figure of speech simile is used, there is not the comparison between two whole objects. But the qualities
the traits, the features of two objects are compared. For example, the face of poet's mother is compared with the face of a late winter moon, not poet's mother, not whole moon. So there is not a comparison between whole moon and whole mother. There is only a comparison between poet's face of poet's mother and the face of a late winter moon. This is the simile. In simile, only traits are compared. और मेटाफर में क्या होता है? मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच. इन मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच द कंपैरिजन इज बिटवीन द होल ऑब्जेक्ट्स. दैट्स इट कि you are the lion of this country. So there is a comparison between you and lion, complete comparison, you and lion, in metaphor figure of speech. But in simile there is a comparison only between the features of two objects. So here there is a simile, and when poet looked at mother's face, she found that mother's face was looking like the face of a late winter moon. So again there is a reason why poet's mother is compared with late winter moon. So you can see in the textbook that there are certain words. लेट विंटर मून कैसा होता है? हाउ इज द लेट विंटर मून? लेट विंटर मून इज वैन, पेल, इट इज लैकिंग इन इट्स यूजुअल ग्लो. जनरली क्या होता है? जनरली इट हैपेंस सो दैट वी कंपेयर समवन्स फेस विद अ मून. व्हेन समवन इज वेरी ब्यूटीफुल वी से दैट योर फेस इज लुकिंग लाइक अ मून. ओके, but not in that context. Here the poet is using the word moon. The moon, which moon? There is a different moon. This moon is late winter moon, not usual moon. And late winter moons, moon in late winter. Moon in late winter appears to be yellow, pale, and foggy because of winter. It appears very foggy and covered with clouds and fog, and it is not giving its usual glow. It is not full of its usual charm, but it is foggy, it is pale, yellow, and it is dull also. So we cannot compare it for beauty. It cannot say that it is beautiful. So that's why there is a comparison between late winter moon and face of poet's mother. And you know that in English winter is also a symbol of death. Winter, because winter is cold, and cold is related with death. ठंडा पड़ जाता आदमी, हम से ठंडा पड़ गया, आप पे ठंडे पड़ गए. So this comparison of winter is also symbolic of death. So the mother is very near to death. She is approaching very near to death. That's why there is a comparison between late winter moon and the face of poet's mother. ठीक है, mother's face is also drowsy, foggy, white, pale, dull, without any glow. Similarly, a moon in late winter is foggy, dull, yellow, and it does not give out its usual glow and charm. So that's why the comparison here is appropriate. The figure of speech uses simile. So in simile we make a comparison by using word like or as. So the word like or as are used here. Like or as, when we compare two objects we use word like or as. And in simile the comparison in between only features of two objects, not complete objects. Okay, complete objects are compared only in metaphor. So here is simile. So now you can see that there are two comparisons in the poem. Comparison means figure of speech, simile. First one is the face of poet's mother is compared with a corpse. Corpse means dead body, with the face of a dead body. And second comparison is that face of poet's mother is compared with a late winter moon. So in this way there are two comparisons. There are two similes used in the poem, two examples of simile used in the poem, and there is also reason why these similes are used. Why face of poet's mother is compared with late winter moon, and why the face of poet's mother is compared with the face of a dead body. You can explain. Now after that again there was a painful feeling. Similarly, earlier there was a painful feeling in the mind of the poet when she found that mother's face was looking like the face of a dead body. So she started looking out of the window to remove that thought, to expel that thought, to forget that thought, to divert attention. Similarly, when she found that her mother's face was looking like the face of a late winter moon, she again became painful. She again became painful. She again became fearful. So here are two words given: familiar ache. In the textbook you can see familiar ache and childhood fear. Familiar ache. Ache means painful, pain, feeling of pain. The adjective familiar is used before ache. So familiar because this kind of feeling of separation from her mother, this kind of feeling of mother's approaching death,
is very familiar with the poet. It is very familiar with the poet because whenever, since the childhood, whenever she is parting with her mother, whenever she is going away with her mother, whenever she is parting with her mother, she have been experiencing this kind of feeling. So that's why this painful feeling is not new. This painful feeling is not new for the poet. This is very familiar. This is very familiar, and this fear of separation, this fear of parting with her mother has been with the poet since her childhood. When she was a child, she used to feel afraid of, she used to feel scared of going away from her mother. Generally, it is found in children that they are very scared of going away from her mother, parting with her mother. They started crying. They don't want to go away from her mother. So this feeling is still in the heart of the poet. Even after growing up, when she was going away, when she was about to catch the flight, she was parting with her mother, she was bidding farewell to her mother. Again this painful feeling of parting with her mother, again this fear of separation from her mother, again this fear of death in the mind of the poet, that possibly it will not be possible for her to meet her mother again there was in her mind. So this is referred as childhood fear, because the fear of parting with her mother has been with the poet since childhood. It is not new, and since it is not new, it is familiar with her. She has been experiencing many times. Whenever she goes away with her mother, she had this kind of feeling. So that's why this painful feeling has been referred as familiar, and this fear of separation with her mother has been referred as childhood, because it is with her since childhood. Okay, so even after this painful feeling, even after this fear in her mind, क्या होना चाहिए था? The poet should have been disturbed, and this disturbance, this painful feeling should have been reflected on her face. Hmm? It is natural, but the poet does not allow this painful feeling and this fear of separation, this fear of mother's approaching, and she does not allow these feelings overpower her. She does not allow these feelings come on her face, appear on her face. She does not allow these feelings reflect through her face, but rather क्या किया उसने? She tried her best to hide these feelings of pain, these feelings of fear, because she did not want to make her mother sad. Mother was already sad because she was already living alone, and at this phase of life, every elder one wants that her children should live with her and morally support her. But due to certain problems, there would have been some individual problems with the poet, that she could not live with her mother. She has to go to Cochin because of some work. So that's why she could not live with her mother and cannot support her physically. So she does not want to make her sad by reflecting her own sadness, by reflecting her own painful feeling. So क्या किया उसने? She tried her best to hide these feelings. She tried her best to hide these feelings, tried her best to hide these feelings. And how did she try to hide these feelings? So she tried to hide these feelings by wearing a smile on her face, by wearing a fake smile on her face. Sometimes we have to wear a fake smile on our face because we doesn't want to show, because we don't want to display what is genuine feeling in our heart, what is really going inside us. We don't want to show it to others. And when we don't intend to show our real feelings, when we don't want to show our genuine feelings to others, what do? We wear a fake smile. We wear a fake smile on our face, and under the mask of this fake smile, we try to hide our genuine feelings. So what were the genuine feelings of the poet? What were the real feelings of the poet? Real feelings of fear of separation from her mother, fear of possible death of her mother. And there were painful feelings in her heart, because she was going with her mother and unable to support her mother physically and mentally and emotionally. So that's why, to hide these feelings, what did she do? She hide these feelings. She wear a smile, a fake smile, not a genuine smile, but a fake smile on our face. And sometimes it is good. Sometimes it is good that we wear a fake smile on our face, because our motto, our intention is to make others happy.
and if we are displaying our true emotions, if we are displaying our genuine feelings to our near and dear ones, they will also become more sad. So that's why the poet doesn't want to see her mother sad. She just want to see her happy. She wanted to provide her a kind of relief. She wanted to see her happy. So that's why she did not show her fear and painful feelings in her heart going on at that time. And that's why she wear that fake smile. And not only the fake smile, apart from the fake smile, she also wear a smile, constant smile, smile and smile and smile. The word is repeated. The word is repeated to emphasize that there was constant smile. There was constant smile on her face. And under that constant smile, under that constant smile, she tried her best to hide her genuine feeling of separation from her mother, genuine feelings of separation, genuine feeling of fear, separation, sadness. She does not want to show these feelings to her mother. And parting words. And the parting words also, when we are parting with someone, near and dear one, when we are bidding farewell to someone, when we are going away from someone, क्या करते हैं हम? We speak some words of farewell. We speak some words of farewell. विदाई के शब्द बोलते हैं चलते समय. See you soon. Okay, meet you soon. See you soon. तो see you soon, the word see you soon. तो उसने पोइट ने क्या वर्ड बोले? See you soon अम्मा. अभी मम्मी को अम्मा बोलती है वो. See you soon अम्मा. तो see you soon अम्मा जो वर्ड उसने बोले, these words are actually the word of farewell, the parting words. The word parting words मतलब the word someone speak at the time of parting with someone. So these parting words, see you soon amma, has a great significance. Because this was a kind of moral support. This was a kind of moral assurance. Moral assurance कैसे कह सकते हैं? How can we say that it was a kind of moral assurance? This was a kind of assurance that poet was assuring her mother. Poet was assuring her old mother. Poet was assuring her mother, who was very near to death, who was on the verge of death, who was very close to death. Even after knowing this fact, that mother would be no more in this world very soon, probably it may happen that after some time, when she will again visit her mother, she won't be able to see her mother. It may happen, but even then she used the word see you soon amma, see you soon. So how hopeful the poet is, and how hopeful assurance the poet is giving to her mother. So this is the sign of moral support. This is the sign of assurance. हम ये तो नहीं बोलेंगे कि we know that someone is going to die very soon. We know very well that someone is going to die very soon. तो हम ये तो नहीं बोलेंगे कि it is very difficult for us to meet very soon. Now you are going to die, and doctor also has given answer. In future we will be no more. You will be no more, and we will not be able to meet you. ऐसे तो कोई नहीं बोलता ना. So when someone near and dear to you, even after knowing that he or she will no more be in this world after some time, even then we try our best to give a kind of assurance that nothing is going to happen. Nothing is going to happen, everything will be okay, and we are going to meet very soon. ये तो बोलते हैं. अब आप ये तो नहीं बोलोगे कि अब हम नहीं मिलेंगे, अब तो भगवान के भरोसे हो तुम, और it is very difficult for us to meet again in future because doctor also has said that you will be no more in this world. ऐसे कोई नहीं बोलता. The poet, even after knowing that it would be very difficult for her to meet her old mother because she was on the verge of death, she was very old, even then, to give a kind of moral support and assurance, she used these parting words, see you soon amma. So see you soon amma, these are the words which has a great significance. And apart from these words of moral support, see you soon amma, parting words, smile also has a great significance. Constant smile on poet's mother also has a great significance. अगर आप कुछ नहीं दे सकते, if you can't give anything, at least you can give a ray of hope to a dying person. You can give hopefulness to a person. You can give optimism to a person just by wearing a smile on your face. So because smile is infectious, and when you are smiling, you will also make other people happy around you, in your vicinity, in your surrounding. So that's why even after being a fake smile,
this fake smile has a great significance. This smile has a great significance because under the cover of that fake smile, under the mask of that fake smile, the poet hide her genuine feelings of pain, fear, and separation. She does not want to show her mother that she herself is very sad, she herself is very fearful, she herself is very scared, because these things, emotions are कैसे होते हैं, emotions are infectious. When you are afraid, other person will also feel afraid. When you are scared, other person will also feel scared. So that's why she wanted to give her mother a kind of moral support, and under the pretext of this moral support, she having a constant smile on her face, no matter it was a fake smile, but this fake smile was successful in hiding her real feelings so that her mother will not be sad. Her mother will be happy having seeing this smile on the face of her daughter. बच्चों के चेहरे पे खुशी देख के माँ बाप को भी खुशी मिलती है, no matter they are old, no matter they are going to die. And similarly, these words of parting words, see you soon amma, these are very hopeful words. So if you cannot give anything, if you cannot give medicine, if you cannot give physical support, at least one thing is sure, you can give assurance, you can give moral support to a person. This moral support is very, very important. When you are giving moral support to a person, it is just like a medicine. It has a medicinal impact on a person, a dying person, old person, sad person. So the poet tried her best to give a physical support and moral support to her mother. So this is the end of the poem. तो इसी पोएम में, अंडर दिस पोएम आई हैव गिवन यू असाइनमेंट ऑल्सो. इस असाइनमेंट में मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे, एंड इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, ऑलरेडी यू हैव वॉच्ड 2 videos, and I hope that after watching these videos you can solve out. You can send me in comment if you are facing any problem. I can see your comments. I can see in your comment. Okay. ओके तो इसी में अभी सबसे पहले असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग. असाइनमेंट में हमने आपको दिया कि जैसे असाइनमेंट में आपको बताया गया था कि ये आदित्य ठाकुर, नाइस सर, जतिन सैनी, जय गुरुदेव, षष्ठी पंडित और पवन सोलंकी, मुर्गेश उपाध्याय, जय गुरुदेव भी आ रहा है सभी बच्चों का. पीयूष अग्रवाल, जय गुरुदेव सर. माई सेल्फ पीयूष, जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव एवरीबॉडी. चलिए तो असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं. इस असाइनमेंट में मैंने आपको पहला क्वेश्चन भेजा था, एक्सप्लेन द थीम ऑफ द पोएम. तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक्सप्लेन द थीम ऑफ द पोएम. थीम ऑफ द पोएम इज डेथ एंड डिके, विच इज अ नेचुरल फिनोमिना of human life. Everyone who is born, he or she has to die one day. यही थीम है पोएम का, कि जिस आदमी का जन्म हुआ है और उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसका जन्म हुआ है, डेथ एंड डिके. ठीक है, लाइफ, डिके एंड डेथ. पहले लाइफ होती है, लाइफ का धीरे धीरे ग्रेजुअली डिके होता है, और डिके होने के बाद फाइनली डेथ होती है. लाइफ, डेथ एंड डिके, ये इसका थीम है. दूसरा जो क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट में दिया था, व्हाट पेनफुल थॉट वाज गोइंग ऑन इन पोएट्स माइंड. तो आपको बता दिया, पेनफुल थॉट ऑफ मदर्स अप्रोचिंग डेथ. Painful thought of mother's approaching death, that she would be no more in this world very soon because she was extremely old, and poet was parting with her mother. All these things were very painful for the poet, and these painful thoughts were going in poet's mind. अगला जो क्वेश्चन दिया था मैंने, नंबर 3, फिगर ऑफ स्पीच. सिंबली इज यूज्ड ट्वाइस इन द पोएम, पिक आउट द लाइन, एक्सप्लेन ऑल्सो. तो मैंने आप लोगों को अभी डिस्कस कर दिया कि इस पोएम में 2 सिंबली यूज हुए हैं. एक सिंबली तो यहाँ पे आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है ना कि हर फेस असेन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स. हर फेस असेन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स. कॉप्स मतलब डेड बॉडी, और हर फेस मतलब द फेस ऑफ पोएट्स मदर. तो पोएट के द फेस ऑफ पोएट्स मदर इज कंपेयर्ड विद द फेस ऑफ ए डेड बॉडी. ये वाली जो लाइन है, कॉप्स मींस डेड बॉडी, तो ये जो लाइन है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंबली. और क्यों मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि पोएट के फेस को क्यों कंपेयर किया गया है डेड बॉडी के फेस से. डेड बॉडी का फेस कैसा होता है, ओपन. ठीक है. और दूसरा जो कंपैरिजन इसका पूछा जाए आपसे, तो दूसरा वाला है इसमें सिंबली का एग्जांपल
कि एज ए लेट विंटर मून, तो लेट विंटर मून से कंपेयर किया है तो दो सिमली हो गए, इसका आंसर दो सिमली। और लेट विंटर मून से क्यों कंपेयर किया है? बिकॉज लेट विंटर मून इज फॉगी, डल एंड नॉट सो ब्यूटीफुल। तो ये हो गया। और इसके अलावा मैंने बताया था कंट्रास्ट भी दो यूज हुए हैं इसमें। तो कंट्रास्ट में टू कंट्रास्ट, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? टू कंट्रास्ट नंबर 4। तो कंट्रास्ट व्हेन द पोएट स्टार्टेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ द कार, तो कार से बाहर जो दो सीन देखे उसने, एक सीन तो देखा उसने मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग, और दूसरा देखा यंग ट्रीज। ये कंट्रास्ट है, ट्रीज आर यंग, मदर इज ओल्ड। और दूसरा वाला चिल्ड्रन आर मैरी एंड एनर्जेटिक, मदर इज सैड एंड लैकिंग इन एनर्जी। तो ये जो दो कंट्रास्ट हो गए, तो दो कंट्रास्ट पोएम में यूज हुए हैं। आप इन्हें एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, यू कैन, मैंने कर दिया, यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट वाज फैमिलियर एक। फैमिलियर एक का मतलब होता है पेन, और फैमिलियर इसलिए बिकॉज इट हैज बीन सिंस चाइल्डहुड एंड मेनी टाइम्स व्हेनेवर पोएट वाज पार्टिंग विद हर मदर, शी वाज फेसिंग विद हर मदर, शी वाज पोएटिंग विद हर मदर। ठीक है, young trees sprinting, merry children sprinting out of their homes. Yes, very good, यही है। ठीक है, अच्छे आंसर देने आप, वेरी गुड। कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें डाल भी सकते हैं कमेंट में कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं आपकी कमेंट देख लूंगा, तो आप इसमें मुझे सेंड भी कर सकते हैं। तान्या ने भेजा यंग ट्री स्प्रिंटिंग, मैरी चिल्ड्रन स्प्रिंटिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वेरी गुड। और सरसी बुडी ने पूछा स्प्रिंटिंग, तो स्प्रिंटिंग ट्री के साथ आ रहा है। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है अपियर टू रन बैक, कोई चीज पीछे भागती हुई लगती है, तो स्प्रिंटिंग ट्रीज, ट्रीज कैसे हैं? स्प्रिंटिंग है। ठीक है, वेरी गुड। और अगला क्वेश्चन आ रहा है फैमिलियर एक, नंबर 5 में। फैमिलियर एक मतलब जो पहले से पेन आपको फैमिलियर हो, नया ना हो। तो पोइट के लिए फैमिलियर एक क्या है? पार्टिंग विद हर मदर। मदर से जब भी अलग होना होता है तो उसके मन में एक अजीब सा पेन होता है, और दैट पेन हैज बीन एक्सपीरियंस्ड बाय हर मेनी टाइम्स, दैट्स व्हाई इट इज नॉट न्यू, इट इज फैमिलियर। और दूसरा है चाइल्डहुड फियर, तो फियर ऑफ सेपरेशन विद हर मदर। बच्चों को होता है ना मम्मी से अलग होने का डर, मम्मी आ जा रही है, मम्मी जा रही है, छोटे बचपन में होता है, बाद में भी होता है लेकिन बताते नहीं है, फिर वो बोलते नहीं है, बड़े होने पर भी होता है, अंदर ही अंदर रखते हैं उसको। तो ये चाइल्डहुड फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर सिंस चाइल्डहुड, बचपन से आज तक है, आज भी है, वो बड़ी हो गई है बट शी इज नॉट शोइंग एंड डिस्प्लेइंग, सो दैट्स व्हाई दिस इज द फियर ऑफ सेपरेशन चाइल्डहुड पॉइंट माइंड। ठीक है, ये वाला भी आप कर लेंगे। अब आता है अगला क्वेश्चन नंबर 6, चाइल्डहुड फियर। ठीक है, वेरी गुड। चाइल्डहुड फियर मतलब बचपन से ही मन में जो डर है, चाइल्डहुड का जो फियर है, शशि पुंडी ने बोला है चाइल्डहुड फियर, फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर सिंस चाइल्डहुड इन दी पोइट्स माइंड, बचपन से ये छोटे बच्चों के मन में होता है और आज भी है उसके मन में वो। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, विच पार्टिंग वर्ड्स वर यूज्ड बाय द पोएट वाइल पार्टिंग विद हर मदर। पार्टिंग वर्ड मतलब फेयरवेल वर्ड, अलग होते समय जो बोले जाते हैं। तो मैंने बताया ना सी यू सू नम्मा, लास्ट में आ रहा ना पेज में सी यू सू नम्मा, अलग होते समय उसने बोला सी यू सू नम्मा। तो ये सी यू सू नम्मा पार्टिंग वर्ड्स हैं। अब लेकिन सी यू सून अम्मा लग रहे हैं, सिंपल वर्ड लग रहे हैं, लेकिन सिग्निफिकेंस मैंने बताया सी यू सून। और जबकि बताया ये गया है पोइम में कि द मदर वॉज वेरी नियर टू हर डेथ वॉज अप्रोचिंग वेरी नियर, शी वॉज वेरी नियर टू डेथ। और पोइट को ये बात पता है, पोइट नोज वेरी वेल दैट इन फ्यूचर इट मे हैपन दैट मदर वुड बी नो मोर इन दिस वर्ल्ड, शी वुड नॉट बी एबल टू मीट हर मदर। लेकिन उसके बावजूद उसने इवन आफ्टर दैट शी यूज दिस वर्ड, पार्टिंग वर्ड सी यू सून अम्मा। तो सी यू सून जल्दी मिलेंगे, तो ये होपफुल वर्ड है, वर्ड ऑफ एश्योरेंस है। वो अपनी मदर को दुखी नहीं देखना चाहती, शी डजंट वांट टू मेक हर मदर सैड बट शी वांट टू गिव अ काइंड ऑफ एश्योरेंस टू हर मदर, मोरल एश्योरेंस, मोरल सपोर्ट। ठीक है, जिससे मम्मी क्या हो, दुखी ना हो। और ये एक कहने का मतलब एक होप बनाने के लिए, मदर को होपफुल बनाने के लिए, मदर को खुश बनाने के लिए, टू मेक हर मदर हैप्पी, उसने बोला सी यू सून। ऐसे ही बोलेंगे ना, चाहे हमको पता है कि हम नहीं मिल पाएंगे किसी से, इवन देन वी यूज सच होपफुल वर्ड्स। तो ये वर्ड ऑफ एश्योरेंस है, मदर को एश्योरेंस देना। ठीक है ना, सी यू सून अम्मा। और हकीकत जानने के बाद भी, इवन आफ्टर नोइंग दैट इट वुड बी डिफिकल्ट टू मीट हर मदर बिकॉज शी वाज वेरी ओल्ड। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 हमारे असाइनमेंट का। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कांस्टेंट स्माइल ऑन पोएट्स फेस इन द एंड, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, दिस इज कांस्टेंट स्माइल। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? जबकि वो पहले बोल चुकी है कि चाइल्डहुड फियर है मेरे दिमाग में, मम्मी से अलग होने का, चाइल्डहुड फियर ऑफ सेपरेशन है, वो बोल चुकी है फैमिलियर एक है, बचपन से हमेशा मम्मी से अलग होने पे एक पेनफुल फीलिंग होती है वो है।
तो फिर ये हंसने का क्या मतलब है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग ए स्माइल इवन आफ्टर हैविंग फियर, इवन आफ्टर हैविंग पेनफुल फीलिंग, even after looking at the sad face of the mother, even after finding that mother's face was looking the face of a dead body, even after knowing that mother's face was looking like the face of a late winter moon. इतनी सारी बातें, फिर ये स्माइल का क्या मतलब है? कोई मैचिंग है इसमें? तो इसका आंसर ये है कि ये स्माइल फेक है। द स्माइल इज नॉट जेन्युइन। अब कभी कभी फेक स्माइल भी बेटर होती है, समटाइम फेक स्माइल इज बेटर देन जेन्युइन स्माइल। ठीक है, आप हंसे जा रहे हैं, कोई आदमी दुखी है, समवन इज सैड एंड यू आर स्माइलिंग, और समटाइम योर स्माइल इज ओनली टू मेक द अदर पर्सन हैप्पी। You don't want to show your hidden feelings, you don't want to show your real genuine feelings of sadness. आपके दिल में sadness है, you are sad, but you don't want to display, you don't want to ventilate out this feeling of sadness. तो आप क्या करते हैं? You suppress, you hide this feeling of sadness so that the other person who is near and dear to you will not be sad. तो उसको आप दुखी नहीं देखना चाहते, तो आप क्या करते हैं? यू वियर अ फेक स्माइल ऑन योर फेस, अ कॉन्स्टेंट स्माइल ऑन फेस, एंड बिकॉज दिस फेक स्माइल एंड कैन मेक द अदर पर्सन हैप्पी। तो यहाँ भी वही रीजन था, पोएट ने अपने अंदर की जो जेन्युइन फीलिंग थी, सैडनेस की, फियर की, वो दवाई, और एक मास्क की तरह, एक कवरिंग की तरह उसने वो चेहरे पे अपने एक मुस्कान ओढ़ ली, और उस मुस्कान के कवर के अंडर द मास्क, अंडर द फेक कवरिंग ऑफ दैट फेक स्माइल, शी हाइड हर जेन्युइन फीलिंग्स बिकॉज शी डज नॉट वांट टू मेक हर मदर सैड, बिकॉज शी वाज ऑलरेडी सैड, शी वाज ऑलरेडी लिविंग अलोन। ठीक है, तो इसमें बताएंगे कि द स्माइल वाज नॉट रियल वन, इट वाज फेक, but even after being fake it has a great significance, it was very valuable, it was appreciating, बढ़िया थी। फिर भी फेक होने के बाद भी समटाइम फेक थिंग्स आर गुड, समटाइम रियल थिंग्स आर नॉट गुड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, पिक आउट एग्जांपल ऑफ रिपीटेशन इन द पोएम। पोएम में जो वर्ड रिपीट हुए हैं, जैसे थॉट, तो ये थॉट वर्ड जो पहले आप पेज पर देखेंगे, थॉट, तो थॉट यहाँ पे दो तरह से यूज हुआ है। थॉट एक तो नाउन की तरह, विचार, थॉट का मतलब, नाउन का मतलब विचार, और एक होता है थॉट वर्ब, आई थॉट दैट, थिंक का सेकंड फॉर्म होता है थॉट। तो उसमें सोच, दोनों ही वर्ड यहाँ पे यूज हुए हैं। थॉट कौन सा था दिमाग में? द थॉट ऑफ मदर्स अप्रोचिंग एंड वाज इन द माइंड ऑफ द पोएट। और क्या सोचा उसने? उसने थॉट को बाहर भगाने का सोचा, सी थॉट अवे, उस थॉट को उसने रिमूव कर दिया। तो पहले तो वो थॉट आया, थॉट एज ए नाउन, थॉट कौन सा? थॉट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, और थॉट को फिर अवे करा उसने, मतलब थॉट को बाहर निकाल दिया, थॉट अवे कर दिया, ये रिपीटेशन है। ठीक है, और रिपीटेशन भी इसमें आ रहा है, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो रिपीटेशन किसी भी वर्ड का जब हमारे पास होता है, तो रिपीटेशन का मतलब होता है हम रिपीट कब करते हैं बात को? व्हेन वी वांट टू ड्रॉ अटेंशन, व्हेन वी वांट टू एम्फसाइज, व्हेन वी वांट टू स्ट्रेस आउट ऑन समथिंग, व्हेन वी वांट टू हाईलाइट समथिंग। तो हाईलाइट करना चाहते हैं हम, तो यहाँ पे थॉट को हाईलाइट किया गया है कि पोएट के दिमाग में thought चला था, that's why the thought word is repeated. So this is repetition of the word thought to emphasize, to highlight that particular thought, nothing else was going on in poet's mind. एक ही विचार चल रहा था, और वो विचार था मदर के अप्रोचिंग डेथ का, मदर से अलग होने का। ठीक है, और आगे जो वर्ड रिपीट हो रहा है लास्ट में यहाँ पर, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, इसको भी रिपीट इसलिए किया गया कि पोइट ने लगातार अपने चेहरे पर स्माइल रखी, और उस स्माइल को खत्म नहीं होने दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी, शी डिड नॉट वांट टू वेंटिलेट आउट हर जेन्युइन रियल फीलिंग्स। ठीक है, तो ये रिपीटेशन हो गए। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 9, What are two uses of the word thought? ये मैंने आपको बता दिया, two uses of word thought। एक थॉट का मतलब होता है विचार, विचार कौन सा था? थॉट ऑफ पार्टिंग विद हर मदर्स। और दूसरे थॉट का मतलब सोचा उसने, क्या सोचा उसने? She thought to put that thought away। इसमें दोनों आ गए, poet thought to put that thought away। तो थॉट मतलब सोचा उसने, और क्या सोचा? उस थॉट को बाहर निकालने का सोचा। तो थॉट इज यूज बोथ एज ए नाउन एंड एज ए वर्ब। थॉट जो विचार होता है वो नाउन होता है, और थॉट हम उसने सोचा वो वर्ब होता है। हमने एक्ट किया, हमने सोचा, दैट इज थॉट वर्ब, और थॉट हमारे मन में आया, दैट इज थॉट नाउन। तो दोनों तरह से यहाँ पे यूज हुआ है। थॉट उसके दिमाग में भी आया मदर से अलग होने का, और उस थॉट को उसने सोचने के बाद बाहर भी निकाला, थॉट एज ए नाउन, थॉट एज ए वर्ब।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। आप अपना कोई भी कमेंट है मुझे भेजते रहे, मैं उसे देख लूंगा। थॉट वर्ब मदर्स थॉट, वेरी गुड तान्या आर्य इज गिविंग गुड रेस्पॉन्स, वेरी गुड तान्या। बिकॉज पोइट हार्ड इज पेनफुल फीलिंग, पवन सोलंकी भी अच्छा जवाब दे रहे हैं और वंशिका गौर भी जवाब दे रही है बिकॉज शी डज नॉट शोअर पेनफुल, वेरी गुड। इससे पता चल रहा है कि आप लोग बहुत अच्छा इंटरेस्ट ले रहे हैं एंड यू आर एक्टिवली participating in this live session, very good. I am very happy that you are actively participating. Tanya Sasti Pundhir, smile and smile and smile, repetition का एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, बहुत अच्छे, very good. I appreciate your efforts. I appreciate your active participation in this live session, everybody. पूनम अग्रवाल, पलक गुप्ता, विशाखा वाशने, वेरी गुड, यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, बहुत अच्छे आप कर रहे हैं, इसका मतलब ये काम देखो कितना अच्छा जवाब दिया है ताने आर्या ने। यंग ट्रीज प्रिंटिंग, वेरी चिल्ड्रन आर सिंबल इमेजेस, बहुत अच्छे, आगे का भी जवाब इन्होंने भेज दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इमेजेस आर यूज्ड इन द पोएम एंड व्हाट आर दे सिंबॉलिक ऑफ, इन्होंने पहले ही भेज दिया, मेरे क्वेश्चन भेजने से पहले जवाब भेज दिया है, बहुत अच्छे ताने आर। और ये क्वेश्चन नंबर है 10। तो इसमें इमेज यूज हुई है, इमेज मतलब कोई हम वर्ड यूज करते हैं तो वो खाली वो वर्ड नहीं होता, उसका कुछ सिंबल होता है, मतलब होता है। जैसे ट्री, यहाँ पर जो सिंबल है वो वाइटलिटी के, ट्री में क्या होती है, ग्रोथ होती है, वो वाइटलिटी, एनर्जी, लाइफ उसके सिंबल होते हैं। तो ट्रीज को यहाँ पर सिंबल की तरह यूज किया गया है। बाहर जो क्या था, जीवन था। पोइट ने जब कार से बाहर देखना शुरू किया, व्हेन द पोइट स्टार्टेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ द कार, देयर वाज लाइफ आउटसाइड, life outside which is symbolized, which is explained through the images of trees, young trees. So young trees are the symbol, young saplings are the symbol of life, vitality, energy, growth. तो ट्रीज इस चीज के सिंबल हो गए। बहुत अच्छे, आपने सही जवाब दिया है, बहुत ही बढ़िया तान्या यार, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। ठीक है, और यूथ का भी है ना, लाइफ के, यूथ के, एक्टिविटी के। और बच्चों को अगर पूछा जाए, चिल्ड्रन, बच्चे किस बात का सिंबल होते हैं? बच्चे उछलते कूदते मुस्कुराते, एनर्जी के, वाइटलिटी के, जील के, जेस्ट के, जोश होता है, विगर होता है उनके अंदर, एनर्जी होती है। ठीक है, वाइटलिटी होती है, एनर्जी, हैप्पीनेस। तो चिल्ड्रन आर ऑल्सो यूज लाइक द इमेज ऑफ वाइटलिटी, एनर्जी। तो कंट्रास्ट इसीलिए आ रहा है पोएम में। जो पोएट के कार के अंदर जो मदर है वो तो सिंबल है डेथ का, डिके का। ठीक है, और बाहर जो चिल्ड्रन हैं और ट्रीज हैं वो सिंबल है लाइफ का, वाइटलिटी का, एनर्जी का, हैप्पीनेस का, ग्रोथ का, लाइफ का। तो सीन आउटसाइड द कार एंड सीन इनसाइड द कार, तो ये कंट्रास्ट हो गया। ये कंट्रास्ट इज वेरी क्लियर, contrast is very clear through the example of children and trees outside. Children and trees outside are the images, and these images suggest that there is life outside, there is energy outside, there is growth outside, there is happiness outside, there is zeal and zest outside. अब आ जाओ अंदर कार के, inside the car the poet is lying just like a dead body, so there is the scene, अंदर का सीन है, वहाँ सिंबल किस चीज के हैं, वहाँ सिंबल है डेथ के, वहाँ सिंबल है डिके के, जो पोएम का थीम है। ठीक है, तो ये क्लियर है कंट्रास्ट, वेरी गुड। 11, इज देयर एनी राइम स्कीम इन द पोएम, यस और नो? राइम स्कीम पोएम के अंदर कोई नहीं है। राइम स्कीम जब होती है जब कोई दो वर्ड मैच करते हैं, म्यूजिकल वर्ड होते हैं, आप जानते होंगे, पढ़ते आए हैं। ठीक है ना, राइम स्कीम नहीं होती इसके अंदर। तो इस पोएम के अंदर कोई राइम स्कीम नहीं है। अब हम बोलेंगे कि जब पोएम के अंदर कोई राइम स्कीम नहीं है तो ये पोएम कहाँ से हो गई, ये पोइट्री कहाँ से बन गई? तो पोइट्री के लिए जरूरी नहीं है कि उसके अंदर कोई मीटर हो या उसके अंदर कोई राइम स्कीम हो, इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, पोएम का मतलब होता है पोइट्री इज द लैंग्वेज ऑफ हार्ट। Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings and emotions. If any writing is rich in feelings and emotions, it is poetic. कोई भी लेख हम लिख रहे हैं, कोई भी राइटिंग हम लिख रहे हैं, अगर it is full of emotions, if it is the language of the heart, if it is directly coming out of the heart, not mind, mind से प्रोज निकलती है। प्रोज is the language of intellect, गद्य जिसे बोलते हैं हिंदी में। प्रोज इज द लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्ट, प्रोज इज द लैंग्वेज ऑफ माइंड। तो जब हम दिमाग की बात करते हैं, जब हम लॉजिक की बात करते हैं, जब हम तर्क की बात करते हैं, जब हम रैशनल चीजों की बात करते हैं, जब हम लॉजिक्स की बात करते हैं और फिर उसे लिखते हैं, दिस इज प्रोज, तो वो गद्य होता है। और जब हम लिखते हैं किसी चीज को, इमोशंस लिखते हैं, व्हेन वी राइट अबाउट इमोशंस, व्हेन वी राइट अबाउट फीलिंग्स, व्हेन वी राइट अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट,
when we pour out our heart what is going on without taking care of the meter, without taking care of the rhyme scheme, वो मैटर नहीं करती उसमें। हम हार्ट की लैंग्वेज बोल रहे हैं, हम अपनी फीलिंग्स को बता रहे हैं, when we are speaking about emotions, so this is called poetry। तो पोइट्री के लिए जरूरी नहीं है कि वो लाइन बने, मैचिंग बने, जरूरी नहीं है। तो आपने इस पोएम में देखा होगा पोइट ने अपने दिल में जो चल रहा था, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई माइंड की लैंग्वेज नहीं है, ये कोई ब्रेन की लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, दिस इज जस्ट इमोशंस एंड फीलिंग्स एक्सपीरियंस बाय द पोइट अबाउट हर मदर। मदर के लिए जो उसकी जेन्युइन फीलिंग्स थी उसको उसने पोर आउट किया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरी पोएम में कोई फुल स्टॉप नहीं है। आप देख सकते हैं देयर इज नो फुल स्टॉप इन द होल पोएम। लास्ट में जाके भी डॉट 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 कॉमा है, ठीक है, सेमी कॉलम्स हैं, कॉमास हैं, लेकिन कोई फुल स्टॉप नहीं है। फुल स्टॉप इसलिए नहीं है कि ये मैनिपुलेटेड आर्टिकुलेटेड पोएम नहीं है। मैनिपुलेटेड आर्टिकुलेटेड पोएम में क्या होता है, हम कपलेट्स बना के चलते हैं, दोहे बना के चलते हैं, 4 लाइन का कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं, 2 लाइन के कपलेट बना के चलते हैं, दोहे बना के चलते हैं, फिर उनकी मैचिंग करते हैं, राइम स्कीम करते हैं, सब दिमाग लगाना पड़ता है उसमें, तब जाके बनती है वो। यहाँ पे ये बताया गया है कि ये स्पॉन्टेनियस फीलिंग्स हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब कमिंग आउट ऑफ द हार्ट ऑफ द पोएट नेचुरली विदाउट एनी एफर्ट। नेचुरली आए वो विचार उसके वाइल ड्राइविंग इन द कार। जो कुछ भी वॉट एवर इमोशंस, वॉट एवर फीलिंग्स, वॉट एवर थॉट come in poet's mind, she as it is, Kamala Das poet as it is write them down, she pen them down। उसने वैसे के वैसे लिख दिया उसको, उसने आर्टिकुलेट नहीं किया, मैनिपुलेशन नहीं किया, उसमें कोई टैम्परिंग नहीं करी, अपने दिल की बात, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस एज इट इज शी पेन डाउन एंड शी एक्सप्लेन कर दिया, उन्हें बता दिया, विदाउट एनी लॉजिक, without any rhyme scheme, without any musical words, without any tampering, as it is। तो वो फ्लो चलता रहा है, that thread of flow emotions, thread of emotions, thread of feelings that is going out throughout the poem without any full stop। कोई स्टॉप नहीं है, वो एक झरने की तरह, just like a fountain, just like a source of water, it came out from her heart and started flowing out। This fountain of emotions and feeling started flowing out of her heart without any stop। तो फिर उसमें स्टॉप नहीं होता। जब नेचुरली कोई चीज दिल से बाहर आ रही है तो उसमें कोई स्टॉप नहीं होता। देयर इज नो, दैट्स व्हाई देयर इज नो फुल स्टॉप, यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड। तो बच्चों ये था एक्सप्लेनेशन इस पोएम का, एंड आई थिंक दैट आप लोगों को लैंग्वेज ऑफ अवर सोल वेरी गुड लिखा है बच्चों ने, बच्चे रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। नो राइम स्कीम इन दिस पोएम, तो मैंने बता दिया कि क्यों नहीं है। ये भी पता चल गया होगा कि लैंग्वेज ऑफ अवर सोल है, ये लैंग्वेज ऑफ विशाखा वासनी ने लिखा है, लैंग्वेज ऑफ अवर सोल इज पोइट्री। यस वेरी गुड। पोइट्री की एक लैंग्वेज होती है बच्चों। पोइट्री के लिए हम डेफिनेशन, सबसे अच्छी डेफिनेशन है पोइट्री की, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। दोबारा रिपीट करता हूं मैं, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है नेचुरल, विदाउट एनी एफर्ट, प्रयास नहीं करना पड़ता। जब दिल से कोई आवाज निकलती है, दिल से कोई बात निकलती है, तो वो लॉजिक में नहीं निकलती, वो कविता के रूप में निकलती है। दिल की आवाज कैसे निकलती है? कविता के रूप में निकलती है। ठीक है, पिक्चर में आपने देखा होगा जब कोई गाना आता है, कोई हीरो हीरोइन, कोई वैसी बातें होती हैं, डायलॉग्स होते हैं, लॉजिक्स होते हैं, कन्वर्सेशंस होती हैं, बहस होती है, डिस्कशंस होते हैं, लॉजिक्स होते हैं, आर्गूमेंट्स होते हैं। लेकिन जब गाना शुरू हो जाता है, तो गाना कब शुरू होता है? द सॉन्ग स्टार्ट व्हेन देयर इज द लैंग्वेज ऑफ हार्ट। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन स्टार्ट इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री। तो पोइट्री इज द लैंग्वेज ऑफ हार्ट। पोइट्री इज फुल ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड दीज आर नॉट मेड, बनाए नहीं जाते, वो इनको बनाना नहीं पड़ता, ये हार्ट से निकलती है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा वो रेन वाला चैप्टर की, रेन का फॉर्मेशन, रेन बनती है, रेन एंड म्यूजिक में, रेन एंड पोइट्री में कंपेयर किया है कि जैसे रेन समुद्र से एवापोरेट होके निकलती है और ऊपर क्लाउड्स बनती है, फिर वापस आती है वो। इसी तरह से म्यूजिक भी क्या होता है, हार्ट से निकलता है और वो दिल तक पहुंचता है, और दिल तक पहुंचने के बाद वो कविता का उदाहरण करता है, दूसरे दिलों तक पहुंचता है। तो सिमिलरली पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो यहाँ भी पोइट के साथ यही हुआ है, इसलिए इसमें कोई फुल स्टॉप नहीं है। वो पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशंस पोइट के दिमाग में आए और वो हार्ट में आए और वो बाहर निकले, और उसने एज इट इज उनको बिना किसी, विदाउट एनी आर्टिफिशियलिटी उसने उन्हें लिख दिया। दैट्स व्हाई देयर इज नो म्यूजिकल वर्ड्स, देयर आर नो राइम स्कीम इन दिस पोएम।
तो बच्चों ये था स्कीम। तो आई होप दैट यू वुड हैव अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। तो आप कमेंट में मुझे बताएं कि आपको इस असाइनमेंट में और भी कोई क्वेश्चन, मैंने आपको इस असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए हैं, ये मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में भेजा भी था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के। और वैसे तो आपने अगर वीडियो ध्यान से देखे होंगे पहले ही समझ में आ गया होगा, और अब बाकी भी चीजें यहाँ पे अब हो गई हैं। मैंने एक एक करके 1 to 11 आपको ये असाइनमेंट के क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए हैं। आपको क्या करना है कि आपको इनको अपनी नोटबुक में एक्सप्लेन करके लिख लेना है। फिर भी अगर आपको लगता है कि इवन देन वी आर फेसिंग प्रॉब्लम, तो आई कैन सेंड यू सॉल्यूशन। कोई बड़ी बात नहीं है सेंडिंग सॉल्यूशन, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट you are watching the videos, and on the basis of careful watching of the videos you are understanding English. इससे आपकी क्या होगी कि when you are watching video your comprehension of English is developing. आप सुन के चीजों को समझ रहे हैं एंड यू आर राइटिंग द आंसर। मैं आपको रेडीमेड आंसर भेज दूं, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क फॉर मी कि आई एम कंपोजिंग आंसर एंड मेकिंग पीडीएफ एंड सेंडिंग टू यू एंड you are copying them, noting down, but you are not understanding anything. But when you are watching the video, you are carefully watching and listening, and then you are reading the text, and फिर मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ लाइव क्लास में, और फिर आप उसके बेसिस पर आपके आंसर लिख रहे हैं। तो इन दिस वे आई थिंक दैट दिस इज द बेस्ट वे, एंड यू कैन ऑल्सो प्ले एन एक्टिव रोल विद मी। आप मेरे साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास में, इसका मतलब ये है। और एक्टिव पार्टिसिपेशन क्लास में कर रहे हैं मींस कि यू आर आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस लाइव क्लास। वरना क्या होता है कि मैं बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट स्पीकिंग आउट, ठीक है, एंड एक्सप्लेनिंग द चैप्टर, एंड आई एम सेंडिंग यू पीडीएफ एंड यू आर नोटिंग देम डाउन। दिस इज अ मैकेनाइज्ड वे, एंड इन दिस मैकेनाइज्ड वे दिस इज ओनली अ वन वे टीचिंग, एंड इन दिस वन वे टीचिंग you are nowhere. You are nowhere. You are just catching the PDF thrown by me, and you are just scrolling them up and down, and you are writing the answers. I want that you should actively participate whenever I am teaching, or active participation can be possible when I send you some videos. You must watch them. और उससे देखने से क्या होगा, your listening ability, आगे हम स्पीकिंग का भी काम कराएंगे आपसे, एक्टिवली आप लोगों को भी इन्वॉल्व किया करेंगे, आप स्पीकिंग भी करेंगे। अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं आप एक्टिवली लिसन कर रहे हैं। तो योर लिसनिंग एबिलिटी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग एबिलिटी योर अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग स्पोकन इन इंग्लिश, एंड कैचिंग द कीवर्ड्स, कैचिंग द मेन आइडियाज, and then noting down in your own language. तो in this way इससे फायदा क्या होगा, your listening ability, writing ability, and ability to understand the facts at your own without any external help. आपको confidence build up होगा, your confidence will build up कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, I can do at my own. आपको लगेगा कि हम खुद कर सकते हैं, इसको हमने देख लिया, समझ लिया, एंड वी कैन कंपोज आंसर्स, वी कैन राइट आंसर्स। तो ऐसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और आपको लगेगा कि वी आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दिस लाइव सेशन, वी आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दिस ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग। वरना वो टीचर बोलते रहे और आप सुनते रहे और आप कुछ कर नहीं रहे, या आपने वही पीडीएफ लिया, उतार लिया, समझ में नहीं आया। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम है। जैसे आज के लाइव सेशन में आपको लगता हो कहीं से भी अभी स्टिल देयर इज सम टाइम, स्टिल देयर आर 5 मिनट्स, सो ड्यूरिंग दिस 5 मिनट्स इन कमेंट बॉक्स यू कैन सेंड मी सो दैट आई कैन गेट अ फीडबैक। तो मुझे फीडबैक मिल जाएगा कि क्या व्हाट इंप्रूवमेंट शुड बी डन, कि क्या इंप्रूवमेंट और किए जा सकते हैं कि और अच्छा उसे बनाने के लिए। और या आज के लेक्चर में भी, आज के इस लाइव सेशन में भी आपको अगर कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप उसको यहाँ कमेंट में डालना बेझिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन। तो मैं देख लूंगा कि आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन ये समझ में नहीं आया, या आपको पर्टिकुलर ये चीज समझ में नहीं आई। आई वॉन्ट दैट ड्यूरिंग दिस क्राइसिस यू आर सिटिंग एट होम, आई एम सिटिंग हियर एंड यू आर सिटिंग देयर। आई वॉन्ट दैट यू मस्ट नॉट फेस एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, or not only face any kind of difficulty, but this kind of teaching should be better than the teaching in the school, better than teaching in the school। उससे भी बेटर चाहता हूं मैं, स्कूल से भी बेटर, क्योंकि आप कंफर्टेबली यू आर सिटिंग एट योर होम, तो आप कंफर्ट में हैं इस समय। तो और मैं यहाँ कंफर्ट में हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल मतलब क्लासरूम से भी बेटर देन द क्लासरूम। उस तब तक मजा नहीं आएगा जब तक आप लोग ये ना बोल रहे कि यस सर दिस इज बेटर देन द क्लासरूम टीचिंग, दिस ऑनलाइन टीचिंग इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, दिस ऑनलाइन टीचिंग इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड।
और अभी ये चलेगा, दिस विल गो ऑन लॉन्ग, ये बहुत 1-2 महीने की बात नहीं है, ये चलेगा, थ्रू आउट द सेशन चलेगा. दिस इज पेंडेमिक एंड दिस पेंडेमिक, एनी पेंडेमिक इज नॉट गोइंग टू एंड इन अ फ्यू ईयर्स. तो चलेगा थ्रू आउट द सेशन. तो यू मस्ट बी परफेक्ट एंड यू मस्ट ऑल्सो गिव योर सजेशंस. तो आप मुझे सजेशंस बताएं कि क्या और बेटर हो सकता है. कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं, और कम से कम आज का बताएं, जिससे कि मुझे एक फीडबैक मिल जाए आप लोगों से कि आज का जो लाइव सेशन था सक्सेसफुल रहा, और आप तक जो मैं बात पहुंचाना चाहता था, व्हाट आई वांट टू सेंड टू यू, दैट हैज बीन सेंट सक्सेसफुली. सो लेट्स स्टार्ट सेंडिंग योर कमेंट्स फॉर नेक्स्ट 4-5 मिनट्स. अगले 4-5 मिनट में आपको इसी बात के दे रहा हूं कि आप मुझे कमेंट जो भी, फील फ्री टू राइट, आप मुझे बताएं कुछ भी कि अच्छा बुरा जैसा लगा, या कमेंट सजेशन फीडबैक. सो लेट्स स्टार्ट नाउ सेंडिंग योर कमेंट एवरीबॉडी, जैसा भी लगा आपको, नो प्रॉब्लम. मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा सभी के, और आगे याद रखूंगा कि आगे आने वाले सेशंस में और उन चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए, सुधारा जाए उसको. कुछ बच्चे रिस्पॉन्स अच्छा दे रहे हैं, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे हैं. पलक गुप्ता हैं, षष्ठी सिद्धांत हैं, नीतू सिंह हैं, रमा शर्मा, आशीष सिंह, कुणाल वासने, आर्यन भारद्वाज, आशीष सिंह, अंजलि सक्सेना, आशीष सिंह हैं, रमा शर्मा हैं, वेरी गुड, इन्होंने बहुत अच्छे भेजे हैं. लेकिन साथ में आप ये भी, जय गुरुदेव के अलावा, जय गुरुदेव ठीक है, मैं सब लोगों की जय गुरुदेव एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम जय गुरुदेव एंड दिस सिंबल ऑफ ज्वाइनिंग हैंड, आप कुछ लिख के भी भेजा कर फीडबैक. दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, कमेंट्स आर मोर इंपॉर्टेंट, सो दैट आई कैन गेट व्हाट आर यू थिंकिंग एंड व्हाट डू यू वांट. और रिस्पॉन्स दिया करें आप, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जय गुरुदेव से ज्यादा. जय गुरुदेव तो आपने, आशीष ही कह रहे हैं कि सर रिमूव बैकग्राउंड साउंड. बैकग्राउंड साउंड में भी कुछ आ रहा है, आपको लग रहा है बैकग्राउंड साउंड में? चलिए नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे. वैसे एट प्रेजेंट आई एम सिटिंग इन साइलेंट जोन, बिल्कुल साइलेंट जोन में बैठा हुआ हूं मैं. इवन देन इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल, देयर विल बी नो साउंड. और भी आगे टिल 10 years एवरी पेंडेमिक टेक्स टू रिकवर, विशाखा वास ने. और ज्यादा बता दिया विशाखा आपने टाइम जो है, कि 10 साल लग जाते हैं पेंडेमिक को. भाई इतना लंबा तो नहीं, कम से कम जल्दी हो जाएगा खत्म. तान्या ने बोला यस सर इट इज गुड, एंजॉय इट. यस द कन्वर्सेशन सक्सेसफुल फॉर अस. और भी बताएं आप. और बैकग्राउंड साउंड की बात आई है, इससे रिमूव करेंगे. चलिए